Hello students, today I will take up international relations. I will take up the summit part of the international relations, where the important summits were held during the year 2022. I will cover the summits like G7, G20, BRICS, BIMSTEC and many other important summits, and I will just cover the important parts. What are the features, where the headquarters, and how many participating countries are there in that summit. It will be very easy for you because from the question paper we can see that this type of questions are asked in the examination. They will generally not ask you the aims, objectives. That will be a very difficult part. In the objective part, they will ask you about the countries, about the headquarters, and which year it was established. Can you hear me? Am I audible? Okay, now let's start the session. The first summit which I will cover is UNOC, United Nations Ocean Conference, which was held in the year 2022. UNOC 2022. United Nations Ocean Conference. I will not write the full form. I am just telling you United Nations, I am just repeating it for you. United Nations Ocean Conference 2022. Where it was held? It was held at Lisbon, Portugal. This type of questions will be asked. Where this was held? UNOC 2022. Where this event was held? It was held at Lisbon, Portugal. Lisbon is the capital of Portugal. I hope there was some brief interruption. And which goal it will achieve? This conference will achieve which goal? It will achieve SDG 14, Sustainable Development Goal 14. This is also a very important question. There are many goals under SDG. In the examination, they will ask you UNOC will achieve which goal? 14, 15, 16, 17. If there are 4 choices, so it will be very difficult for you if you don't know the right choice. And if the choices are very close, 14, 15, 16, 17, if the choices are wide, you can take a guess. But if the choices are very close, it is very difficult to take a guess or to eliminate. So here, this conference will try to achieve SDG goal 14. SDG 14. And another thing, in this ocean development, another point which I want to emphasize is UN has also declared that UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Which year they have declared? Which decade they have declared? This might be asked in the examination.
the event decade of ocean science. Event decade for ocean science. I am not writing the full form UN. I think you will be knowing this term, United Nations decade. Of ocean science. Of ocean science. The decade is 2021 to 2030. 2021 to 2030. So here they can make some choices. Event decade of ocean sciences, they can give the choices like 2021 to 2030, 2022 to 2030. So if you know the right decade and the right choice, then only you will be able to mark the right answer. That's why I am giving you in very brief which type of questions will be asked in the examination based on your previous year's questions. The second summit. Now I will cover the second summit. Very shortly, I will cover the second summit, which is very, very important. That is I2U2. I2U2. In this I2U2, they will ask in the examination, it might be asked that I2 represents which countries? U2 represents which countries? The I2 means there are two I's. Two I. The countries start, the initial name of the country starts with I. The initial name of the country starts with U. So you must know that which are the countries under I2 and U2 and which are the areas where they are working. Broad areas. I will give you 2 or 3 areas. I think this type of areas are generally not covered in the examination, but for your knowledge sake, I will give you 2 or 3 broad areas where I2, U2 is working in that area. I2 means there are 2 countries. For your benefit, I am highlighting this. I2 is India and Israel. India and Israel. Are you clear? 2 countries under I2. 2 countries under U2. Which are the 2 countries? I2 part is cover. Huh? Now I will write about U2. Which are the 2 countries under U2? UAE. You write it, Arab Emirates. I am telling you the form. I will not write here the entire thing. It will take lot of time. And the second country is USA. Please take it down. USA. You are very clear? I2, U2. 2 countries under I, 2 countries under U. Now, what are the objectives of this I2, U2? Which areas they are working, they will work.
The areas in which they will work are water areas. Water energy transportation space health one thing I would like to make it very clear that this I2U2 is not a military alliance like Quad, which I will come up later. This is not a military alliance. This might come in the examination. Is it a trade alliance? Is it a military alliance? Both or none of the above? The questions may be asked in that fashion. Or they may try to mix up the choices. A and B, A and C, like that also. But here, this is I2U2 is not a military alliance. This is not a military alliance. I am writing it here. Not a military alliance. These countries will seek cooperation in these areas. And from the areas it might be seen, it is quite visible, it is a trade alliance. After some time, they will do trade in the health sector, in the energy sector. They will get involved in trade. Be very clear where there is a trade alliance and where there is a military alliance. Nowadays, small countries are making alliances. 2 countries, 3 countries, 4 countries, a bloc is coming together. And sometimes they come for the sake of military alliance and they convert into trade alliance. They come together for trade alliance and then become a military alliance. So be very careful while studying this part. When you go back to your books, when you revisit your book, which type of alliances are there? Now every day, every month, an alliance is formed. So while going through the alliance part, you have to see how many countries are there. These are typical. I2U2. It is a typical thing. Many countries start with the initial I. And there are many countries which starts with the initial U. If you know the right word, which stands for I here, which countries stand for I2, which countries stands for U2, then only you will be able to answer the question and mark the right option during the examination time. Now I will cover, now I will go back, now I will come to the third summit. That is BIMSTEC. Very, very important. BIMSTEC. I have already covered 2. Now I will cover 3. This is a very, very important BIMSTEC. How many participating countries are there? Where is the headquarter of BIMSTEC? There are 7 participating countries. I will write it down. The headquarters is at Dhaka,
Bangladesh. BIMSTEC. Headquarters, Dhaka, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh. Clear? Any doubts till now? I am trying to make it very, very clear, and I am trying to pinpoint the various factors, the various parts in that summit which are asked in the examination. If you have anything to ask, you might ask me during the session or after the session. But here in this part, I think you don't have too many questions, because in the examination they will generally give you the participating countries, the headquarters, and what are the broad areas of cooperation. From the trends of the question paper, which we have observed for the last 3 to 4 years, this type of questions are generally asked in your examination. So you must be very thorough with the terminology, with the headquarters, with the participating nations, and which are the broad areas of cooperation, research, and whether it is a trade alliance or whether it is a military alliance. So the participating countries are in BIMSTEC, the participating countries. The participating countries in BIMSTEC are I am just erasing the part Dhaka, Bangladesh to create some space in the board. The participating countries are Bangladesh, very clear. When the headquarters is at Bangladesh, the country, first country will be Bangladesh. Second country is India. Bangladesh, India, Myanmar, okay, BIM. S. What is S stands for? Sri Lanka, T. T stands for Thailand. And there are other countries like Nepal or Bhutan also. There are other countries like Nepal and Bhutan also. Nepal, Bhutan. They have joined later. Initially 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now there are total participating countries are 7. Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal, Bhutan.
In the month of March 2022, BIMSTEC conference was held at Sri Lanka. This question will be asked, where the BIMSTEC conference was held in the year March 2022. The venue was Sri Lanka. And now Sri Lanka is the virtual chair. He is the virtual chair of BIMSTEC. I will write it down. You please take. I am writing it. Please take it down. We are very clear. 7 countries, headquarters, and the last meeting of the BIMSTEC, the last event where it was held, and who is the chairperson, who is the chairman of the group now. The chairman of the group now is Sri Lanka. In the chair, it is Sri Lanka. Generally, in international summits where the conference is held, they assume the chair part. They assume the chairman. In the case of G20, India will be the chairman. India is the chairman, and India will now host the G20 summit. India has been given a chance. I will come after G7, G20 part, then I will tell you how India has become the chairperson and now how they will host the event. I think India will host the event during March 2023, this year only. Sri Lanka. And it was held the month. In the examination, they always ask for the month. In which month it was held? The month was March 2022. And at that time, it was a COVID pandemic time. This summit was held in the virtual mode. This summit was held in the virtual mode during the time, that part of the year, March 2022. It was a pandemic time, and at that time, this conference was held in the virtual mode. Month March 2022. Mode real or virtual? It was virtual. If you break up the points like this while studying the summit part, it becomes very easy to remember. How many countries are there? Where are the headquarters? When it was held? Who is the present chairperson? And which are the broad areas? Now I will tell you the broad areas of cooperation. Their areas of cooperation are as same, I think so. Energy, transport and communication, energy, transport and communication, और भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, वह है कि जहाँ पर इनको भौगोलिक सुविधा मिले, ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस, इनको भौगोलिक सुविधा मिले, उस क्षेत्र में भी
ये 7 देश काम कर रहे हैं। बिम्स्टेक 7 देश है, मैंने 7 देश का नाम आपको लिखवा दिया, इनको हेडक्वार्टर्स बता दिया, ठीक है। और इनके कुछ क्षेत्र है जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपके लिए, परीक्षा के लिए इतनी ज्ञान आपके लिए काफी है। यदि आप इतना भी याद रख लेते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने जो देखे हैं आपके प्रश्न पत्र, हमें जो प्रश्न पत्र के प्रारूप से जो हमें मिला है, आपको इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको उतना ही ज्ञान दे रहे हैं। आपको ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत से विषय हैं। आपके पास इतिहास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है। तो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो हम लोग आपको बेसिक नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी बेसिक नॉलेज के आधार पर आप उच्च अंक प्राप्त कर पाएंगे। यू विल गेट वेरी हाई स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन if your basics are very clear. I am telling you, if your basics are very clear in any subject, it might fetch you very good marks. तो अभी हम 4th वाला लेंगे। 4th समिट कहां था, ठीक है। फोर्थ देखिए, मैंने बी को, आई हैव लेफ्ट बी, पर यहां पर बी विल बी डिफरेंट थिंग। आई डोंट वांट टू राइट दैट सेम टर्म टाइम एंड अगेन। आई हैव लेफ्ट द बी। नाउ आई विल टेक अप ब्रिक्स। Here B stands for Brazil. R stands for Russia. I stands for India. C stands for China. S stands for साउथ अफ्रीका, ठीक है। वहां पर एस क्या था, श्रीलंका। यहां पर एस क्या है, साउथ अफ्रीका। बाकी आई, बिम्स्टेक में भी आई इंडिया था, I2U2 में भी इंडिया था, ठीक है। आई, वी आर फाइंडिंग दैट आई इज वेरी कॉमन, इंडिया इज ऑलवेज देयर, but in S etc. be very careful. Now S stands for South Africa. और ये समिट कहां होस्ट किया गया था, लास्टली चाइना में। वो था 14th समिट। इट वॉज द 14th समिट। ये समिट भी चूंकि पैंडेमिक का समय था, कोविड का समय था, ये वर्चुअल मोड में किया गया था और ये होस्ट किया गया था चाइना में, ठीक है। इट वॉज द 14th समिट ऑफ द ब्रिक्स। वी वेरी क्लियर, जहां पर हमें नंबर मिल जाते हैं, आई विल टेल यू विच नंबर ऑफ द समिट। समटाइम्स 4th है, 5th है, 6th है। दिस वॉज द 14th समिट एंड इट वॉज हेल्ड एट चाइना ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो ये क्या था, रियल मोड में नहीं था, ये वर्चुअल मोड में था, ठीक है।
14 समिट कहाँ किया गया था? चाइना में, इन वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड। क्लियर? अब तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर। जितने भी बात आपको बताए जा रहे हैं, ओनली फ्रॉम दिस आर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन भी होगा, आपका नॉलेज भी है, ठीक है? तो हम आपको उतने ही बात बता रहे हैं, उतने ही चीज बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इधर उधर की बातें हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको ब्रिक्स में इतना बता दिए हैं। और मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूं कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर इनका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना। संघाई चाइना, ठीक है? इतने तो क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट ले जाऊंगा G7। G7, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। G7 में कितने देश है? 7 कंट्रीज है। दीज आर वेरी इजी, क्योंकि ये जितने भी कंट्रीज है दे आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज G7 में। तो मैं आपको कंट्रीज के नाम लिख दूंगा, पहले बता दूंगा आपको G7 में कितने कंट्रीज हैं, ठीक है? G7 number of countries 7. Here the number is 7. That means 7 countries are there. 7 देश हैं। पर अभी यूरोपियन यूनियन को भी ले गया गया। जर्मनी जैसे मेंबर थे, तो जर्मनी तो यूरोपियन यूनियन में है, तो यहाँ अभी यूरोपियन यूनियन भी है एक G7 में। इसीलिए ये क्वेश्चन आप घुमा के भी पूछ सकता है, इज यूरोपियन यूनियन ए मेंबर ऑफ G7? ठीक है? बाकी तो बड़ा आसान है। USA, यूके चूंकि निकल गया है अब यूरोपियन यूनियन से, इसीलिए, ठीक है? इटली भी है इसमें, जापान भी है। तो व्हाट हु आर द कंट्रीज इन G7? जब ये G7 बना था, ठीक है, उस टाइम में 6 नेशन थे। US, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उस टाइम में जब बना था G7, उस टाइम में इट वाज वेस्ट जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण नहीं था, इट वाज वेस्ट जर्मनी एट दैट टाइम। उस टाइम में 2 जर्मनी थे, वेस्ट एंड ईस्ट। इट वाज वेस्ट जर्मनी जब इनिशियली बना था G7। बाद में तो जर्मनी का एकीकरण हो गया, देयर वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इट बिकेम ए सिंगल जर्मनी, ठीक है? जापान,
इटली। ठीक है, वेरी क्लियर। और ये इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? G7 कॉन्फ्रेंस was held in the month of June at जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के किस प्रदेश में था, वो प्रदेश में लिख देता हूं आपके लिए सुविधा के लिए। हाँ, बड़ा टिपिकल प्रदेश था ये जर्मनी में। जर्मनी का राजधानी भी नहीं है। जर्मनी में एक इट इज़ ए वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एलमाउ। एलमाउ in Germany. Elmau in Germany was the venue of 48th G7। देखिए 48 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 48 समिट, और ये कब हुआ था ये समिट? जून 2022। ठीक है, G7 समिट में इंडिया को भी एज ए पार्टिसिपेंट इनवाइट किया गया था। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड whether India was a participant at 48 G7 summit. India was invited at G7. How many? 30 minutes. So, India was also a participant at 48th G7 meeting. ठीक है, इंडिया को कब इनवाइट किया गया था? जर्मनी में। ठीक है, जैसे G7 कंट्रीज इज मेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, पर इंडिया, चूंकि इंडिया इज ए ग्रेट सुपर पावर नाउ, तो इस देश को भी बुलाया गया था उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और ये समिट किस पर था? क्लाइमेट, एनर्जी एंड हेल्थ। क्लाइमेट, एनर्जी एंड हेल्थ। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें इस G7 समिट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर था यहाँ पर। इसको कहते हैं हम लोग गिफ्ट डिप्लोमेसी। इसको हम कहते हैं गिफ्ट डिप्लोमेसी, जहाँ गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ था। गिफ्ट डिप्लोमेसी, इट वॉज नोन एज गिफ्ट डिप्लोमेसी। India has gifted many important things to the various countries during this G7 summit. And the most important thing which India has gifted to the nations was that has a GI tag, geographical indicator tag. This question will be asked in the examination. The GI tag. Which product of India with a GI tag
was gifted during G7? ठीक है, it will be a very typical question and very difficult question also. The item which was gifted has a GI tag. It is from Varanasi, UP. It is named as Gulabi Meenakari. Gulabi Meenakari from UP, from Varanasi, UP has a GI tag. जैसे इस कंट्री में दार्जिलिंग टी has a GI tag. हिल्सा फिश has a GI tag. ठीक है, रसगुल्ला has a GI tag. In the same way, Gulabi Meenakari from Varanasi, UP with a GI tag was gifted by PM Modi to all the countries. PM Modi attended this summit at Germany. ठीक है, क्लियर है सब? उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा एक यूनिक समिट में, समिट नहीं, एक प्रोजेक्ट में, जो बताना चाहूंगा कि इंडिया ने हिंदी के प्रोत्साहन के लिए क्या किया था. ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी एट इवेंट. यहां पर ये क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. यूएन में वर्किंग लैंग्वेज क्या है और यूएन के 6 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज क्या है, और आपको यूएन में लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए क्या करना है. ठीक है, 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. आपको 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं. हिंदी के प्रोत्साहन के लिए यूएन में कितनी भाषाएं हैं, वहां 6 भाषाएं हैं, वहां के वर्किंग लैंग्वेजेस क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच है. ठीक है, और किसी भाषा को यदि हम चाहते हैं कि हिंदी को लाया जाए यूएन के भाषा में, दैट हिंदी शुड बी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड एज अ लैंग्वेज इन द यूएन. तो व्हाट आर द प्रोविजंस इन द यूएन रेजोल्यूशन, इन द यूएन कॉन्स्टिट्यूशन? उसमें है 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल वोट इन फेवर ऑफ दैट लैंग्वेज. तभी ये लैंग्वेज को यूएन के लैंग्वेज में हम ला सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ला सकते हैं. व्हाट आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन? ये मैं आपको लिख दूंगा. ठीक है, वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूएन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, और किसी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या करना है ये बता दूंगा. और ये जो यूएन का जो हिंदी प्रोजेक्ट था, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने how much money they have spent for this project to get recognition for Hindi in that forum. ठीक है, सिक्स लैंग्वेजेस यूएन में 6 लैंग्वेजेस है. ठीक है, लैंग्वेजेस इन यूएन. ठीक है, एक है चाइनीज,
एक है इंग्लिश, इंग्लिश तो है ही, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक। कितने हुए लैंग्वेजेस? चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक। 1 2 3 4 5 6, 6 लैंग्वेजेस है यूएन में रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो आपको इसमें से कुछ लैंग्वेजेस दे देंगे और उसमें दे विल आस्क ट्राई टू कंफ्यूज यू बाय राइटिंग हिंदी, वेदर हिंदी और चाइनीज और सम अदर लैंग्वेजेस दे विल राइट। ठीक है, तो आपको 6 लैंग्वेजेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, और सेकेंड बात है वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएसए, यूएन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग लैंग्वेज ऑफ 6 लैंग्वेज है। ठीक है, वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएन, वर्किंग लैंग्वेज ऑफ यूएन, that is English and French. In the examination ये पूछा जाता है, they will confuse and write English Spanish, English Arabic, English Chinese. Since you will find that Chinese has a huge population, so Chinese has a working language there in UN. The 2 working languages in UN are English and French. Okay, clear? And for a language to be included as an official language in UN, for inclusion as an official language in UN, what do you need? Inclusion of a language as an official language in UN, what do you need? Inclusion of a language. किसी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए, हम चाहेंगे कि हिंदी को लाया जाए यूएन में, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए प्रावधान है कि 2/3 मत से जितने भी राष्ट्र है यूएन में उनका मतदान होगा। ये 2/3 राष्ट्र कहते हैं कि इस भाषा को लिया जाए, तभी उसी भाषा को लिया जाएगा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। ठीक है, इंक्लूशन ऑफ ए लैंग्वेज। तो व्हाट आर द प्रोविजंस? two-third member countries. Here in the examination 2/3 के जगह they will say 1/3, half. They will make the choices like that. 2/3 के जगह 2/3, one of the choice will be 2/3, one choice will be 1/3, one choice will be 1/4, one choice will be half. So if you know the right thing, right answer, then only will be able to mark it as 2/3 members present and voting. ठीक है, क्लियर? अब मेरे को आपको मैं अब ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे ले जाऊंगा, इम्पॉर्टेंट समिट पे।
जिसकी बहुत चर्चाएं हैं अभी, दैट इज WTO, WTO, ठीक है। WTO, वर्ल्ड, W stands for world, T stands for trade, O stands for organization। इनका 12th मीटिंग हुआ था और ये कहाँ हुआ था, फर्स्ट डील कब हुआ था, ठीक है। ये मीटिंग हुआ था, 12th मीटिंग जो हुआ था, ये मीटिंग हुआ था शायद इंडोनेशिया में, ठीक है। और इस मीटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ ए ब्रेक थ्रू। अब तक जितने भी मीटिंग हुए हैं इसमें WTO में, सब में स्टेलमेट है, किसी भी निर्णय पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। एवरी नेशन इज टेलिंग कि आपके कंट्री में ट्रेड बैरियर्स है, आपके कंट्री में कुछ है, हमें फ्री स्पोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें आप रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। तो इन द फर्स्ट टाइम एट बाली इंडोनेशिया में जो कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर स्टेलमेट नहीं था, एक डील हुआ था, ठीक है। आफ्टर 9 years के बाद एक डील किया गया था, ठीक है। और ये डील था पीस क्लॉज, ये डील था पीस क्लॉज, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतना ही रिमेंबर करना है, ये डील किस पर था, पीस क्लॉज, ठीक है। और इस पे और भी अदर थिंग थे जो शायद आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई विल कवर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और आपको अभी मैं इंपॉर्टेंट ले जाऊंगा जो इस साल क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज G20। G20 हैज़ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस कंट्री नाउ बिकॉज इंडिया इज नॉट द चेयरपर्सन, तो इसी पर प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको G20 के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा G20। G20 में कितने कंट्रीज हैं, 20 देश हैं। यहाँ पर इतना संभव नहीं है, इतना समय नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम और लिबर्टी टू राइट ऑल द कंट्रीज। कंट्रीज के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, इसीलिए आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, 20 countries you might be knowing, but in some examination they give that like G20 countries के जितने भी countries है, you must know the names। Sometimes they ask the question, कुछ कुछ कंट्रीज के नाम दे देते हैं, चॉइसेस में दे देते हैं नाम, और पूछते हैं कि ये कंट्रीज क्या G20 में है। तो इफ यू नो द राइट कंट्रीज विच आर इन द G20, then only you will be able to mark the right answer। 5 कंट्रीज के नाम दे देंगे, ABCD में डिफरेंट कंट्रीज, उसमें से 2 रहेंगे, 3 नहीं रहेंगे। एक ही ऑप्शन में रहेगा जहां 5 कंट्रीज, द 5 कंट्रीज आर इन G20। तो इफ यू नो द राइट थिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क। बट हियर ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम और इतना समय नहीं है बताने के लिए, G20 कंट्रीज जितने भी हैं, यू प्लीज गो थ्रू इट टाइम एंड अगेन, हैव ए वेरी ब्रॉड आइडिया, क्योंकि उसमें मेजर कंट्रीज ही पूछे जाएंगे, स्मॉल कंट्रीज 1-2 पूछ लेंगे बीच में से। And generally confusion comes when some small country is asked. You think you overlook the small country. But actually that country is in the G20. ठीक है ना। G20 समिट कहाँ हुआ था अभी,
बाली इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट। बाली इंडोनेशिया। ठीक है, दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एट बाली इंडोनेशिया। इसके पहले करंट में कौन था, करंट चेयरपर्सन कौन था, इंडोनेशिया। इसके पहले चेयरमैन कौन था, इटाली। अब चेयरमैन कौन है, इंडिया। G20 इंडिया। नेक्स्ट समिट इज एट इंडिया। G20 इंडिया। इंडोनेशिया के बाद ये आया इंडिया, इट केम टू इंडिया। नाउ इंडिया विल बी द चेयरपर्सन फॉर G20। ठीक है, एंड हु इज द शेरपा। G20 में एक वर्ड यूज होते हैं शेरपा। ठीक है, हर कंट्री अपना एक शेरपा अपॉइंट करते हैं। जैसे हिमालय में, इफ यू गो टू द हिमालयाज, इफ यू गो टू द माउंट एवरेस्ट, द शेरपा विल गाइड यू, द शेरपा विल हेल्प यू in climbing the mountains. In the same fashion, in the G20 summit, there is a important dignitary named as Sherpa. This question will be asked, who is the G20 Sherpa for India? G20 Sherpa for India is G20 Sherpa for India is नीति आयोग CEO फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। वेरी इंपॉर्टेंट, very important from the examination point. Who is the Indian Sherpa for the G20 summit to be hosted by this country, most probably in March at Jaipur? The Sherpa for India is अमिताभ कांत। ठीक है, जो नीति आयोग के CEO थे। ठीक है, फॉर्मर CEO थे नीति आयोग में, प्लानिंग कमीशन, इसको पहले हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, आज उनका नाम है नीति आयोग। ठीक है, G20 में क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? हाँ, G20 इज ए ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। G20 इज ए इट इज ए ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। It is a group of finance ministers. It is a group of finance ministers. And it is a forum. ठीक है, it is a forum. Not a legislative body. Not a legislative body. It is a forum. Not a legislative body. इनको कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं किसी भी संस्था के।
ठीक है, ये लेजिस्लेटर नहीं है, इनको कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इट इज़ अ फोरम जहाँ लीडर्स मीट करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मीट करते हैं, जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके गवर्नर्स मीट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट करेंगे, एंड यूरोपियन यूनियन के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है दे विल ऑल्सो मीट एट दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, G20 इज क्लियर। G20 में आपको इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी एक लेटेस्ट बता देता हूं आपको, 19th एशियन इंडिया समिट। हाँ, 5 मिनट्स, ঠিক আছে, हाँ हाँ finish। 19th एशियन इंडिया समिट, 19th ASEAN। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया समिट, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कंबोडिया, कंबोडिया। ठीक है, जगह का नाम था PHNOM, बड़ा टिपिकल नाम था पर बड़ा फेमस जगह था ये, फेनोम फेन, वेरी टिपिकल नेम, वेरी फेमस प्लेस कंबोडिया में, इस देश में इनका दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। इंडिया के तरफ से गए थे जो हमारे प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है, ही अटेंडेड दैट समिट। ठीक है, और आपको और एक मैं बता देता हूं, FATF। ठीक है, FATF, FATF, what does FATF stands for? ठीक है, it is a financial action task force, financial action task force, task force, FATA stands for. In the examination they might ask you and they will give you something, free trade, like they will include a word like trade etc. ठीक है, so you must know the correct abbreviation, financial action task force. This abbreviation is generally asked in the examinations and generally the students make a mistake. And it has a list. It has a list like grey list, black list, and Pakistan was the country which was in the grey list. So they might ask which country is in the grey list under FATF. FATF has a color code. They have a color code, and Pakistan was having Pakistan
Pakistan was having this grey list. Pakistan was under grey list. What do you mean by grey list? Another question it may come. What is the grey list under FATF? Grey lists stand for terror funding. They stand for terror funding and money laundering. See, here 3 questions might be asked. What is the full form of FATF? What is who is in the grey list? And what do you mean by grey list? Grey list means the countries. FATF, Financial Action Task Force, designates countries according to their categories. Okay? The country which is in the grey list, which means they are sponsoring terror funding and money laundering. Okay? Now I will talk to you about OPEC. OPEC. Oil producing exporting countries. Very common. Everybody knows about OPEC. But where is the headquarter? Basic facts about OPEC. OPEC. I will talk to you about OPEC. Organizations of Petrol, OPEC. Organization of Petrol Exporting Countries. Organization of Petrol Exporting Countries. It was established in the year 1960 with countries like Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, is it okay? These countries you will be very familiar. Generally they export petrol. All the countries in the Middle East, Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia. The only countries which will be unique country there, that is Venezuela. These countries are very common in the Middle East. The country which is very uncommon and which might asked in the examination, Venezuela. And the headquarter of OPEC is in the capital of Venezuela. Okay. So this type of questions are generally asked in the examination. But now OPEC has 13 members. Initially it was 1, 2, 3, 4, 5. But now it has 13 countries. Russia is also a member of OPEC. Okay. And how much crude and other things OPEC has with, and I will just conclude with this thing. Okay. Okay. OPEC has roughly 40% of the world's crude oil
and 80% of the global oil reserves. Of the global oil reserves. Fine. These 2 points are very important from the examination point of view. 40% of the world's crude oil and 80% of the global oil reserves. With this, I conclude the session, and tomorrow I will try to cover the other parts of the international relations like India, Bangladesh, Nepal, etc., which is very relevant for you from the examination point of view. परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उसी विषय को लूंगा. मैंने आपके प्रश्न पत्र देखे हैं, देखने का मौका मिला मुझे, एंड फ्रॉम दैट विच आई कुड गैदर, कल आई विल कवर बांग्लादेश के साथ अभी इंडिया के क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे और भी डिफरेंट कंट्रीज में. ठीक है, थैंक यू. और भी आपको कोई प्रश्न है, यू कैन आस्क मी और मेल मी. आई एम फ्री टू आंसर all your questions or you have any clarifications on this part. Summit I have tried to make it very clear. जो important summit है I have tried to cover it. ठीक है, इसी summit में से ही questions रहेंगे. And tomorrow जितने भी events रहेंगे, जितने भी foreign के साथ हमारे diplomatic relations हैं, उनके साथ हमारे क्या क्या अभी तक agreement हुए हैं, समझौता हुए हैं, MOU साइन किए हैं, briefly I will try to cover in that session. Thank you. ठीक, okay, fine. ठीक है सर. ঠিক আছে, 1 ঘন্টার উপরে।